2007 से 2011 आई वर्कड इन गेमिंग इंडस्ट्री फॉर पीपल. इंडिया सेटअप आप जब करते हो ना तो ऑफेंड बहुत लोग होते हैं. So how much time does this whole process take for you to design? It will take you at least 1 month to figure out that entire. तो एज अ गेम डिज़ाइनर आपके लिए वो इतना बड़ा चैलेंज हो जाता है कि आप गेम्स बना रहे थे 2 MB में, अब आपको गेम बनाना है सिर्फ 150 KB में. इंडिया से अभी तक देयर इज़ नो बिग टाइटल दैट हैज़ कम आउट. प्राइमरी लीनियर स्टोरी जो है गेम की मुक्ति की, इट्स अ 7-hour स्टोरी. How do you see gaming in India evolving now? अगर यहाँ पे 10 लोग बढ़ रहे हैं तो यहाँ 1000 लोग बढ़ रहे हैं. But जिस स्पीड से होना चाहिए शायद उस स्पीड से it's not happening. Wanted to make sure कि we don't screw up on that side. Hello everyone, we are back with another exciting episode on What's the Point Season 2. Now I am sure we have all been addicted to at least one game in our entire lives. Even our parents are addicted to games. Video games I'm talking about. So today's episode we have a person who develops games. Yes, you heard it right guys. There is a person who sits, creates, designs, develops this entire thing, and we have this person on our podcast today. Please welcome with us Vaibhav Chauhan. He's a video game designer and developer, right? So, hi Vaibhav. It's a very big pleasure to have you on our show today. And I would like to begin by asking you, what made you choose video games as your career? Yeah, thank you for the introduction. And you rightly said that there is a person who actually sits and make games, right? Because when I was starting in the industry, this was back in 2000, between 2001 and 2006-7, when I was looking for options to figure out कि कैसे जाते हैं गेम्स में. तब तक लोगों को यही लगता था कि गेम्स सिर्फ आ जाते हैं, फ़ोन में आ जाते हैं या फिर वेबसाइट्स पे आ जाते हैं. देयर इज़ समबडी हु एक्चुअली सिट्स एंड मेक्स गेम्स, राइट? ये इतनी नॉलेज नहीं थी लोगों की. तो दैट्स द सेम थिंग दैट वाज हैपनिंग विद मी आल्सो. बट 2001 में एक्चुअली माय 2001-2000 माय फादर ब्रॉट अ ब्लैक एंड वाइट PC. तो वो एक सेकेंड हैंड मशीन था. ही गॉट इट फ्रॉम वन ऑफ हिज फ्रेंड्स. वो जब भी उन्होंने लाया तो हिज आइडिया वाज कि so me and my elder brother, 2 साल का गैप है हमें. तो he's a mechanical engineer and he was very good in studies. So my father wanted us to learn computers, right? But we ended up playing games on that because the second hand the owner of that machine had a lot of games on his machine. So we tried to discover all of those and we started playing games like वो पहले कुछ गेम्स थे, डेंजरस डेव, प्रिंस ऑफ पर्शिया 1, वुल्फेनस्टाइन 3D, ऐसे बहुत ब्लैक एंड वाइट मशीन पे वो डॉस बेस्ड गेम्स होते थे. सो व्हेन वी स्टार्टेड प्लेइंग दिस वी गॉट एडिक्टेड टू इट. तो मेरे बड़े भाई से ज़्यादा आई गॉट एडिक्टेड टू इट एंड मैं ये फिगर आउट करने लगा कि इसको बनाते कैसे. एंड दिस वॉज 2000-2001. सो जब मैं फिगर आउट कर रहा था, द ओनली थिंग आई गॉट टू अंडरस्टैंड इज कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, गेम डिज़ाइनिंग क्या होता है, आर्ट क्या होता है, ये सब मुझे नहीं पता. बट आई स्टार्टेड सीइंग 3D कैरेक्टर्स इन दोज गेम्स. तो वो एक हिंट लग गया कि बाकी कुछ आता है पता नहीं हमें, बट वी कैन मेक 3D कैरेक्टर्स, राइट? तो आई स्टार्टेड फिगरिंग आउट 3D Max, माया, ये जो सारे टूल्स थे जिसमें आप 3D कैरेक्टर्स बना सकते हो. तो थ्रू आउट 2001 से 2007, सो आई डिड माई डिप्लोमा इन 2001. तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी 2001 से 2004 मैंने की. उसके बाद 2004 से 2007 आई डिड इंजीनियरिंग. पर ये पूरे 6 साल आई वॉज जस्ट डूइंग माई रिसर्च ऑन गेम्स. तो ज़्यादा बाकी डोमेन्स का नॉलेज नहीं था, इसके लिए मैं सिर्फ 3D कर रहा था. सो आई वाज सेल्फ लर्निंग 3D टूल्स. माया, मैक्स में मैं चीज़ें बनाते जा रहा था. So these are like software. या these are softwares. और ये सॉफ्टवेयर टूल जैसे फोटोशॉप होता है जो आप इमेज बनाते हैं, वैसे इससे आप 3D मॉडल्स बना सकते हो. बट क्योंकि वो टाइम पे ना इंफॉर्मेशन नहीं थी. देयर वर 2 बिग प्रॉब्लम्स इन इंडिया. फर्स्ट, इंडिया डिड नॉट हैव गुड इंटरनेट. ठीक है, तो वो हर किसी के घर में नहीं था. वी ऑल्सो हैड टू गो टू साइबर कैफेज टू एक्चुअली सर्व करने के लिए. और अगर
किसी के पास इंटरनेट था तो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन नहीं था. सो हाउ डू यू गेट इनटू गेम्स? आप उसमें डोमेन्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ थी ही नहीं. बट फॉर्चुनेटली क्या हुआ, आई वॉज फिनिशिंग माई इंजीनियरिंग 2007 में, एंड इंडिया गेम्स एक बहुत बड़ी कंपनी थी उस टाइम पे. सो दे पोस्टेड एन आर्टिकल सेइंग, इट वाज अ जॉब पोस्ट कि ट्रेनी गेम डिज़ाइनर देख रहे हैं वो लोग. आई अप्लाइड फॉर इट, आई गॉट सिलेक्टेड. इट वाज अ वेरी वर्स्ट इंटरव्यू ऑफ माई लाइफ बिकॉज मैंने 6 टेस्ट दिए वहाँ पे. दूसरे दिन मेरा मेरे इंजीनियरिंग का लास्ट एग्ज़ाम है और मैं यहाँ पे बैठ के टेस्ट दे रहा था उनके. इंटरव्यू में आई डिड से ऑल द रॉन्ग थिंग्स दैट आई कैन पॉसिबली से, क्योंकि गेम डिज़ाइन ये एक डोमेन, बहुत स्पेशलाइज्ड डोमेन है. और मैं कर रहा था गेम आर्ट, और मुझे पता ही नहीं था कि गेम डिज़ाइन क्या होता है, राइट. तो मैंने पूरे इंटरव्यू में ये सब चीज़ें बातें की हैं गेम आर्ट के बारे में, बट दे जस्ट सॉ समथिंग कि पैशनेट है, कुछ करना चाहता है, सो दे गेव मी एन अपॉर्चुनिटी. दैट इज हाउ द journey started. But just to give an understanding to the audience also, गेमिंग इंडस्ट्री में 4 ब्रॉड डोमेन्स होते हैं. पहला होता है गेम डिज़ाइन, जहाँ पे आप गेम को लिखते हैं. जस्ट बिकॉज डिज़ाइन वर्ड आता है, इट डजंट मीन कि आप उसमें डिज़ाइन कर रहे हो. इट इज़ अबाउट राइटिंग अ गेम. सो आप उसको इक्विवेलेंट कंपेयर कर सकते हो मूवी के राइटर के साथ, स्क्रिप्ट राइटर के साथ, स्क्रीन प्ले राइटर के साथ. So there's a proper script that games follow as well. सो जब भी कोई गेम बनता है ना, उसके पहले पूरा का पूरा गेम एक डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है, राइट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू उसके फिनिश तक. उसके सिवा वो प्रोडक्शन में नहीं जाता. सो ये काम गेम डिज़ाइनर्स करते हैं. Okay. फिर गेम आर्टिस्ट होता है सेकेंड कैटेगरी, जिसमें जो गेम डिज़ाइनर ने लिखा हुआ है कि अगर मैंने लिखा है एज अ गेम डिज़ाइनर, मैं लिखता हूँ कि मेरा प्रोटैगनिस्ट 6 फीट लंबा होना चाहिए, उसके लाल बाल होने चाहिए, तो ये आर्टिस्ट पढ़ता है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जिसमें गेम डिज़ाइनर सारी चीज़ें लिखता है ना, उसे गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट कहते हैं. तो वो एक बाइबल की तरह ट्रीट होता है पूरे प्रोडक्शन में. तो आर्टिस्ट उसको पढ़ता है और उस तरीके से आर्ट बनाता है. प्रोग्रामर जो थर्ड कैटेगरी है, वो उसी को पढ़ के प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देता है. और ये तीनों जब मिलके एक अल्फा स्टेज तक एक प्लेएबल वर्जन बनाते हैं, फिर क्यूए में जाता है, फिर टेस्टिंग में जाता है. तो बेसिकली 4 ब्रॉड कैटेगरीज: गेम डिज़ाइन, गेम आर्ट, गेम प्रोग्रामिंग एंड गेम टेस्टिंग. Okay, so there are 4 categories that people can go in. So I started with game design. So you started with game design. So you write the games. I You still started write with games, yeah. you still write games, and you also do the artwork. No, I don't. So now you just design the Yeah, games, like you write the entire screen. When I entered India Games, वहाँ पे मुझे एक्चुअली गेम डिज़ाइन क्या होता है वो पता चला. एंड देन इट वाज लाइक अ कॉलिंग कि दिस इज़ व्हाट आई एम मेड फॉर, राइट. बिकॉज मेरा एक जर्नी में एक एस्पेक्ट भी है. इन कॉलेज आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ थिएटर. तो थिएटर में इट्स एंड ऑफ द डे इट्स स्टोरी टेलिंग, राइट. तो आर्ट से ज़्यादा उसमें ज़्यादा इंक्लाइन था मैं. सो आई फाउंड गेम डिज़ाइन मोर इंटरेस्टिंग. Right. And when it comes to game designing also, are there any factors that you have to keep in mind? That how do you follow a storyline? What is it that maybe, I don't know, incepts a storyline for you? How do you decide that, okay, this is a storyline I would want to go with? See, it depends on the category of the game that you're building. क्योंकि ऐसे भी गेम्स होते हैं that don't need stories. Right. These are fun games, engaging games. आपने देखे होंगे, हाँ, you just keep playing those games. कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिसमें स्टोरी कोर होता है, जिसमें आर्टवर्क होता ही नहीं है. Right. There was a game called Thomas Was Alone. It's a multi-million-dollar game. एक ही बंदे ने बनाया हुआ वो गेम है. It is a relationship between shapes. So square, triangle, square, circle, इनके बीच में एक relationship का story लाइन. But it is so well written and so well made कि it made a lot of money, right? तो हर category के लिए अलग-अलग thought process जाता है. Also platforms भी depend करते हैं. Like if I'm making a game on web, तो वो छोटा होगा, उसकी limitations भी छोटे होंगे. 2007 से 2011 I worked in gaming industry for people. तो मैं जैसे इंडिया गेम्स में मैंने स्टार्ट किया, I was making games for
फॉर सिम्बियन फोन्स, जो वो कीपैड वाले फोन आते थे Right. ना, जिसमें बाउंस करके गेम Bounce. था, तो Snake. वो सारे गेम्स हम लोग बनाते थे. Okay. तो उसके बाद में व्हेन आई वेंट टू गेम्स टू विन, मैं 2009 मिड में मैं गेम्स टू विन में मैंने जॉब स्टार्ट किया था एज अ गेम प्रोड्यूसर. सो Right. गेम प्रोड्यूसर इज द वन हु मैनेजेस गेम डिजाइनर्स. Entire. गेम डिजाइन, हाँ, तो वो पूरा उस उनके अंडर आता है गेम प्रोड्यूसर Right. के. देन यू हैव टू मैनेज द एंटायर प्रोडक्शन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. Right. तो व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर गेम्स टू विन, आई वाज वर्किंग ऑन वेब बेस्ड गेम्स. तो जो वेब ब्राउज़र पे ज़पैक करके एक वेबसाइट था, गेम्स टू विन, तो मैं उनके लिए करता था. तो उसकी एक लिमिटेशन होती है, एक मेमोरी साइज़ होती है, उसकी एक लिमिटेशन होती है कि 2 MB के अंदर ही गेम फिट होना चाहिए. बट जब मैं हंगामा में गया तो 2011 में फर्स्ट टाइम पीपल स्टार्टेड मेकिंग गेम्स फॉर टीवी. तो वो जो DTH जिसे हम बोलते थे, जिसो वी वर मेकिंग गेम्स फॉर टाटा स्काई. Right. तो एक रिमोट के ऊपर आपको खेलना था वो गेम. Correct. तो एज अ गेम डिज़ाइनर आपके लिए वो इतना बड़ा चैलेंज हो जाता है कि आप गेम्स बना रहे थे 2 MB में, अब आपको गेम बनाना है सिर्फ 150 KB में विथ ओनली 2 स्क्रीन्स. तो वो डिज़ाइन चैलेंज होता है. नाउ वी आर मेकिंग अ गेम फॉर PlayStation 5 विच इज़ लाइक एन एंटायर डिफरेंट हॉराइजन, जिसमें आप Correct. 100 GB का भी गेम्स बना सकते हैं. सो गेम डिज़ाइन चैलेंजेस बहुत होते हैं. डिपेंड करता है कि आप कौन से गेम पे फोकस कर रहे हो, कौन से कैटेगरी पे कर रहे हो, कौन से प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो. Okay. And now that you've mentioned that there are different domains that are, if any person wants to get into gaming as a career, are there any specific courses, any specific, I don't know, studying background that a person would need to, get into any particular domain? Or is there an umbrella course for all of it कि आपको हर चीज़ की कोई basic समझ में आ जाएगी, or there are certain different courses for each domain? Yeah, so there are different things. Different. Sadly, India is at a point where there is no formal education for game development yet. IITs have started it, but वो बहुत ही छोटा कोर्स है. Okay. So जैसे आप अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हो और आप इंजीनियर बन के बाहर निकलते हो. Right. आपको डॉक्टर बनना है तो आप MBBS कॉलेज में Yeah. एंड यू बिकम अ डॉक्टर. देयर इज नो कॉलेज इन इंडिया जिसमें आप फ्रेश जाते हो और आप गेम डेवलपर बन के बाहर निकलते हो. आपको आपके स्किल सेट को आइडेंटिफाई करके यू नीड टू बिल्ड ऑन दैट स्किल सेट. सो जो मैंने 4 ब्रॉड कैटेगरीज बताई, अगर आप आर्ट अच्छा करते हो तो आप प्रोग्रामिंग को छोड़ दो साइड में, ओनली फोकस ऑन गेम आर्ट. सो गेम आर्ट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? सो देर आर सर्टन थिंग्स दैट यू डू इन दैट. अगर मैं गेम डिज़ाइन चूज़ कर रहा हूँ तो उसके लिए सर्टन चीज़ें हैं, बट वो बहुत मतलब डिटेल्ड कॉन्वर्जेशन है. Right. There is no official or formal college in India. There are smaller institutes, private institutes जो करते हैं. Sadly, another big scene in India is बहुत reputed. You might have heard of these institutes, art institutes, जो 30 साल से इंडिया में हैं, जो बहुत पॉपुलर हैं. मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट those colleges are taking advantage of gaming industry right now. कि उनके कुछ कोर्सेज है जो 5-10 लाख के कोर्सेज है, जिसका टाइटल है गेम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट. एंड अगर एक बंदा उसमें ज्वाइन होता है ना, दे ओनली टीच 3D सॉफ्टवेयर्स जो माया और मैक्स ये हैं. नाउ इफ़ यू रिमेंबर द कॉन्वर्जेशन दैट वी स्टार्टेड, गेम डिज़ाइन इज़ समथिंग एल्स, जो ये बड़े इंस्टीट्यूट्स को भी अभी तक क्लियरली पता नहीं है, बट दे नेम देयर कोर्सेज एज गेम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट. सो जिसको थोड़ा सा भी अंडरस्टैंडिंग है स्टूडेंट को, वो गेम डिज़ाइन सोच के उसमें जा रहा है, 5-10 लाख रुपए वेस्ट कर रहा है, एंड देन एंडिंग अप. या Okay, and so I think that's something our education system needs to really push into for a formal education in this field as well. Because I think everyone is gaming. Gaming is such a big industry right now. Like, people are actually making careers of just being gamers. So I think, yeah, and because it has such an immersive, it offers us such an immersive experience. So that is something I feel like earlier I used to think, okay, why are people so much into gaming? Like, kya baat hai isme? But then when I actually saw people play and everything, and when I saw these games, I was like, oh my god, this is very lifelike, and I think I understand how. So I think that is something which is called narrative. I'll tell you 2 things which makes
games more interesting than cinema. Like I love cinema. I'm a movie buff. But games में ना आपको दो चीज़ें मिलती हैं. One is immersiveness कि आप मूवी एक लीनियर पर्सपेक्टिव से देखा जाता है बट गेम आप 360 से देखते हो क्योंकि एक पर्टिकुलर रूट नहीं होता. एज अ गेम डिजाइनर आई वांट द प्लेयर टू गो फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस बट यू डोंट नो प्लेयर क्या करेगा. वो और चार जगह जाके फिर वहाँ पे जाएगा. बट यू नीड एज अ गेम डिजाइनर यू नीड टू मेक श्योर कि अगर वो वहाँ पे भी गया तो भी ही हैज़ टू कंटिन्यू दैट मूड जो मुझे कैरी करना है उस गेम में. तो वो इमर्सिवनेस इज वन थिंग. And second thing is player agency, where people, when they actually get involved into a game, they feel they own it. They are the protagonist. आप किसी और की स्टोरी नहीं देख रहे हो. Then you are the protagonist and you are the taking the story ahead. Yeah. So that's one thing that is now a gaming industry. I think in 3-4 years in India also it will take over music and movies also. Globally it has already done that. But India में अभी तक वो हुआ नहीं है. But I think I think it's in the front. Yeah, It's in the making now. Yeah. Yeah, and since you mentioned that you have to give a 360 perspective to people, and you have to, each, I don't know what, sub stories of it are also something you have to build. So how much time does this whole process take for you to design? So because you have to think on all levels, I feel, all perspectives, all narratives you'll have to build. So उसमें time कितना जाता है? It is an iterative process, honestly. मतलब game designers start करते हैं and to an extent जब एक there's something called as vertical slice, which means कि आप एक particular piece बनाते हो game का जो highly polished हो. उतना understanding जब team को आ जाता है then it becomes like an iterative process. एक फ्रेमवर्क बिल्ड होता है उस डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी ऑफ गेम. जैसे अगर आप एक कैंडी क्रश जैसा गेम की बात कर रहे हो तो इट विल टेक यू एटलीस्ट 1 month टू फिगर आउट दैट एंटायर मॉडल. बट उसके भी पहले बहुत मार्केट रिसर्च जाता है वेदर यू एक्चुअली हैव टू बिल्ड दैट गेम और नो. डज पीपल आर प्लेइंग अ लॉट ऑफ दीज गेम्स. आपके गेम की ज़रूरत भी है गेम मार्केट में या नहीं. But then it starts from that, right? And Candy Crush जैसा गेम not in that depth, but structurally अगर उतना एक गेम मैं बनाने जाऊँ तो 3 महीने लग जाते हैं पूरे डेवलपमेंट साइकिल को. बट पहला 1 महीना वो डिज़ाइन में लगेगा एंड देन आइटरेटिवली जैसे प्रोग्रामर्स कुछ फिगर आउट कर रहे हैं इट गोज बैक इनटू द डॉक्यूमेंट. सो जब गेम फिनिश होता है GDD फिनिश होती है जो गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट फिनिश होते हैं. बट गेम्स लाइक everybody is waiting for GTA 6 now. 12-13 साल हो गए. But just to give you some numbers, right? $2 billion have been spent into making that game right now. वो क्रॉस हो चुका है उसके डेवलपमेंट का बजट. But it is like everybody is very sure that they'll make that money in 2 days globally. But if you look at the GDD of that game, right? There's no one GDD. There are like 100 documents which are this big. And people are writing it like there is बाहर बड़े गेम्स में ना there is a narrative designer, there's a game designer, there's a gameplay designer, there's a vehicle designer. सारे चीज़ों के अलग designers होते हैं. They write it. There is a mission designer. So there is only focusing on those missions. With that is why it's taking so long. I think it's only fair. And I would like to ask you, how did people around you react when you said that मैं video games बनाऊंगा for a living? Yeah, it was very. So this is 2007, right? And I come from a very middle class family. My father has a very small mechanical workshop, so he makes metal dies, smaller pieces of bigger machines, right? So he has a small mechanical workshop. We grew up in a very small place. So my brother went into mechanical engineering. That is the reason I was pushed into computer engineering. I had no interest in doing that. I am very grateful that I did that because all the interpersonal skills, the time management, people management, everything came from engineering. Because last minute में assignment लिखना is time management. I think engineering teaches a lot of things to a lot of people. Yeah. So I was doing that, but मेरा keen interest JJ में जाना था. So I was good at art. तो मुझे JJ में जाना था. I fortunately cracked that also, but
वो जाने नहीं दिया मुझे आगे. So when I was doing engineering because my parents wanted me to do it. But वहाँ पे मैं बीच में जो figure out कर रहा था कि मैं gaming में कैसे switch करूँ, I got that opportunity, right? India Games में जब मैंने start किया, I worked for only 4 months because this is 2007 and 2008. If you remember, it was one of the worst recession period. Yeah. जब आया था वो. Right. In 4 months they fired me because जितने I think 30 probation employees थे जिनको एक साथ निकाल दिया उन लोगों ने because they said like पैसा नहीं है हमारे पास. So I came crying. I was 22 year old. तो मैं पूरे रूट में घर पहुंचने तक I was crying. The moment my mom opened the door, I told her, she started laughing. She was so happy कि he was going against the standard ये जो भी करना था उसको. Now that he went, 4 महीने किया, अभी वो निकला. Now now you should do this. So I'm crying and she's very happy, right? Because at that time it was not a career. Right. Everybody was scared about this gaming. Gaming किसी को मालूम ही नहीं था. तो I had to face a lot of problems because of that. जब वहाँ से निकला तो recession was so bad that I was jobless for 1.5 years. I was sitting at home. I was trying to do some programming stuff and all, but jobs ही नहीं थे. People were not taking, they were not hiring, right? तो ये जब चल रहा था ना, so I was forced into going for a job for a software programmer role. क्योंकि कितने दिन ये करेंगे ना, so I went into that. But उसके बाद that recession continued for 9 more months. I got fired from that place also. But during that period, I totally understood कि this is not what I want to do in my life. क्योंकि programming मेरे लिए बहुत easy होते जा रहा था. Like I was very good at programming also. नौ घंटे का 9 घंटे का task was finishing in 1 hour. And I in that remaining 8 hours I was trying to figure out games. मैं उसमें भी उस कंपनी में बैठ के अनरियल इंजन खोल के बैठ रहा था. आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट गेम्स कैसे बनते हैं. बट वो जब भी हुआ, वहाँ से जब भी निकला, तो देन आई वाज वेरी श्योर कि गेम्स में ही जाऊँगा. भले आई सिट मोर 1 more year फिगरिंग आउट, बट मैं गेम्स में ही जाऊँगा. बट एट दैट टाइम देन माई पेरेंट्स वर लाइक कि ठीक है, लेट हिम ट्राई फॉर 2 years. इफ दैट वर्क्स आउट देन तो that was a breathing space for me. But at the same time, society and all that pressure, relatives, वो तो चल रहा था. But because I immediately got a job at Games to Win, then it was all settled. Slowly things changed. In 2 years, I started my own company. So 2011 में I started Underdogs. So right now at Underdogs, you are also developing a game yourself called Mukti. Yeah. Right? So can you tell us what Mukti is? So we started Underdogs in 2011, but the whole idea was to make good big PC and console games. It took us 12-13 years to actually reach to that point. हम लोगों ने 250 games बनाए across different verticals. We made games for gaming companies, digital agencies, brands, movie production houses. बहुत games बनाए, but the satisfaction of making your own IP was different, right? So 2018 में me and my co-founder Sankesh More, who is the first guy that came to Underdogs in 2011, is still with us. And he basically is a co-founder now. So he's also working as a creative director on Mukti today. But 2018 में हम लोगों ने actually लिखा था first draft Mukti का. It was like a 1-pager. And then slowly उसको हम लोग polish करते करते In 2000? Sorry. 18. Okay. Yeah. So we wanted to get into production as soon as possible, but because India was very early at that time, funds nahi the, COVID came, a lot of things happened, so we couldn't go into production. So we continued doing the pre-production of the game. So pre-production mein we started writing the details of it, characters, background stories, level progression, sab kuch. And then in 2021 we actually got a mega grant from Unreal. So Unreal Engine जो use करते हैं हम लोग, they came to us saying that they loved what we are doing and they wanted to give us a mega grant, which is a grant of $25,000 जो उन्होंने हमें दिया Okay. to make the game, right? So we did like a small vertical slice, again the 30 minutes का demo of that game,
and we pitched it to Sony. So in 2022, we pitched that 30 minutes demo to Sony, and Sony के साथ 1.5 साल के conversation के बाद Sony agreed to help us develop the entire game on PlayStation 5. So this is historical because this is the very first time that Sony is doing something like this. Nationwide 400 applications गए थे. They selected 5 companies. We are one of those 5 companies. And Sony is entirely helping us develop this game on PS5 because it is not just about the funds. पूरा fund लगा रहे हैं वो लोग from 2024 February से till the time the game will release. But at the same time they are helping us more on the technical side also. Right. तो वो चीज़ें हो रही हैं. And what is the setup of the game like? What? So Mukti, just to give you a brief of Mukti, right? Mukti is a first-person story exploration game, narrative game है. You don't kill anyone, you don't shoot. It is a game where you inspect elements, you figure out a story behind it. There are puzzles that you solve, and you find evidences, and that evidences take you to the story. So you connect the dots. Plot ये है कि you play as a 24-year-old girl. Who lands in an Indian museum. वो वहाँ पे आती है to figure out what has happened to her grandfather, because right now there is a news that this guy is missing. Right, so she lives in New Jersey, so she travels all the way here because she wasn't able to connect with him for the last 3 months. So she's worried and she's here to figure out where this guy is. Why she comes in this museum is because this museum is owned by this guy. Her grandfather. Yeah, so he owns that museum. He lives in the quarters of the museum itself. So the whole game you play in the museum itself. So it's a 6 to 7 hours game. You start 5 p.m. in the evening, and it's a one night game. It's a one night story. So you figure out all the stuff. It's like it's Sherlock Holmes, Nancy Drewish kind of feel to Very it. investigative Yeah. feel. Yeah, one of the reasons, like there are a couple of reasons why Sony came on board is because this exploration narrative category is very popular globally. Second, global gaming audience जो है ना, they have reached to a stagnancy point because they have been playing games in the American and European background for last 40 years. वही खेल रहे हो लोग. Character भी अमेरिका Canvas ही का different हाँ नहीं वो है कोई. so that is the reason why you see a lot of Japanese and Chinese games doing well in the last 4-5 years. So next in line was India, right? Because India में जितनी stories है, cultural and mythological, all of that, Sony wanted to bring that out for the global gaming audience, and Mukti basically revolves around something about that. We are not talking about a mythological story. We are talking about modern India. One of the core element of the game is we talk about human trafficking. Oh. It is a very dark subject. We are not preaching, but we are telling a story about someone who has gone through that experience. So it is a game for change. It is a game which has a very deep subject to it. That is the reason Sony is very much interested to take this story to the global audience. So when you were also going about for the funding of it, were there also times when people would just reject the idea? Yeah, I feel they still do it. They still do it. funding a project like your own baby project must be very difficult until the grants that came along. So what kind of people do you approach if you want to fund your own project? What are the kind of places, people, or companies that one can approach for investments? So again, there are two categories in India. When you're making a game, either you make as a solo indie developer, or you do it as a business, right? We are a business. We are a studio who has been there for last 14 years, right? And we've made more games. So when we approach from a business point of view, right? Because we are not a one game company. Mukti is our first IP, but we are planning a pipeline of more IPs which can grow as bigger transmedia projects as well. So when we say transmedia, Mukti is supposed to come out as a game first and then go on other platforms as well as series or movies also, or comics also, right? So that's the idea. So Mukti ke saath there are other IPs that are in line. So as a business, we pitch that idea. We don't pitch games, right? So that's the difference, and we pitch it to investors.
when you are a solo, when you are an indie developer, you basically talk about your game. And you know कि इस गेम को बनाने के लिए मुझे कितना पैसा चाहिए. You try to talk to individual investors who are interested in games, who have money, who can put money in the games, because that's like a one game deal. कि आप किसी से $20,000 ले रहे हो और फिर आपको उसको बोलते हो कि आप गेम रिलीज के बाद 20% रेवेन्यू आपको दे दूंगा. That kind of deals, right? So there are a lot of independent developers in India जो ये तरीके के काम कर रहे हैं. Also there is a third category जो आप दोनों लोग अप्रोच कर सकते हैं, is publishers. So publishers ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी गेम्स को पब्लिश किया है, उन्होंने एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया है. They have money to spend on marketing as well. क्योंकि indie developers don't have money to spend on marketing. They are surviving, doing their 9 to 5s and then making these games. So they approach publishers. We also approach publishers, but we have a different set of deals that we talk to publishers. Because right now we are building it for PS5 and PC, right? हम लोग इसको मोबाइल पे भी जाएंगे लेके, but then we'll go to Netflix directly. We'll talk to Netflix that they do the subscription model for the game, कि वो सिर्फ वहाँ से मोबाइल पे आए. So things like these are happening. But publishers and solo, you can say angel investors, इनके पास you can go. Yeah. And from what I hear, I still feel like funding a game or funding a project like a game project, which is still not very widely spoken here, is still a very difficult task. Getting funds for, really taking it up. How do you like right now I understand you have your funds and everything, but earlier initially when you began your company, how did you keep your team or the people who were working with you motivated ki nahi, it's gonna happen? Because it's a slow process, right? And sometimes it so happens that okay, when people see that there is no funds coming in, we are still working, so how do you keep the team motivated ki nahi, it's gonna happen, we need to work on this? I try to build a DNA for a company, because I think that is what helped me stay in a longer run. क्योंकि मैंने खुद 200 companies देखी है जो start होके बंद हो चुकी हैं. My whole idea and the name, if you look at the name of the company, right, it's Underdogs. We believe, and that's the DNA of the entire system, we believe in under committing and over performing, because then it's more fun, right? आप ज़्यादा बोलो और बोलते ही रहो और काम मत करो, तो that's not the strategy. When I started Underdogs, I already had 3 projects in my pipeline, right? That helped me build like a runway कि मेरे पास पैसा है अगले 18 महीने के लिए. And I started hiring people. When I hired people, I made sure that they follow the DNA that I am trying to build, right? Because there are people who only work for money. There are people who work for passion. और इंडस्ट्री वो लेवल पे नहीं थी जब आपको पैसा मिले 2011 में, right? It was a passion driven business at that time. So I tried to bring in people, only those people who are very driven and who want to, go long term. Yeah. This guy that I'm talking about, Sankesh More, right? It's a funny story. क्योंकि मेरे पास जब मैं स्टार्ट कर रहा था ना, तो my father, why did I bring my father in this pictures? Because the first the setup, company का setup, right? My father has a very small mechanical workshop, but he gave me a space of 4x4. एक बहुत ही छोटा सा स्क्वायर दे दिया, तो मैंने उसके अराउंड 4 प्लाईज लगा के ऑफिस बनाया था. If you come out of that box, it's all metals and metal pieces और आवाज. Every 5 seconds there is a press that is there. You can hear a loud sound of that press जो metal sheets ये हो रहे हैं. 2011 में अगर मैं किसी को बोलता कि ये गेमिंग कंपनी है and you have to work here, nobody would, right? Only the people who were very passionate about it, they worked with me in that space. So this guy used to, so I went to a very local institute in a place where I live, right? मैं वहाँ पे जाके मैंने उनको सिर्फ ये बोला कि ये मेरा कार्ड है. I started a company. Send me the best guy that you have. And they sent one guy, very young guy, who took like 2 hours to figure out कि ये gaming company है, यहाँ पे काम करना. But then he stayed, right? So these are different breeds. You try to build that DNA in your company from day one,
automatically it translates into the people that join. So that is something that helped me. I tried to keep it in that format itself. That's interesting. I think it's people who are very fueled by passion will Yeah. always come to places like this. Yeah, They yeah. who and when it comes to when did the money start coming in? Like when did you actually, as a company, properly, you know, कि हाँ पैशन पे तो लोगों ने काम कर लिया, but still you know there is still a money making Yeah. mindset कि कुछ तो पैसा है. So when did that begin happening? So when I was in Games to Win, I was making 11,000 rupees per month. ठीक है, गेमिंग इंडस्ट्री था. माई फ्रेंड्स वर मेकिंग 30-40,000 बिकॉज दे वर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड इन डिफरेंट कंपनीज, TCS में कोई है, एक्सेंचर में. आई वॉज मेकिंग 11,000 रुपीज़. गेम्स टू विन में मुझे पता चला द एंटायर सिस्टम ऑफ हाउ टू मेक अ गेम. आई डिसाइडेड आई विल स्टार्ट अ कंपनी, अ स्मॉलर स्टूडियो, बट आई न्यू कि मेरे पास नेटवर्क नहीं है. सो आई मूव टू हंगामा. ओनली द रीज़न वॉज कि मैं नेटवर्क बनाना चाहता हूँ. I spent 1 year just making good relationships with people. I only made 16,000 rupees per year, per month, sorry, in Hangama, right? But जब मैं प्लान कर रहा था कि मैं 2 महीने बाद छोड़ के स्टार्ट करने वाला हूँ अंडरडॉग्स, आई मेड श्योर कि मेरे पास 3 प्रोजेक्ट्स हैं. एवरी प्रोजेक्ट कॉस्टेड 1 lakh rupees, right? So when I was leaving that company, I had 3 lakh rupees in my bank. अब आप इमेजिन करो जो 16,000 रुपये कमा रहा है जिसके बैंक में 3 लाख रुपये. He was excited. That guy was excited to start this thing because he had a runway, he had money. So my Hangama network helped me build this business. So Underdogs was profitable from day one itself. तो आई मेड श्योर कि मेरे पास मैं ऐसे चालू करना है करके आई डिडंट जंप इनटू दैट. एंड बिकॉज आई मेड दोस 3 games in 1 month itself, आई हैड 10 more games in pipeline. तो वो स्टार्टिंग से ही वी वर मेकिंग मनी. इट वाज ओनली आई थिंक 2017 से 19 तक का बहुत बुरा फेज था बिकॉज कोविड ऑल्सो केम एंड ऑल. शिफ्ट वॉज हैपनिंग, अ बिग शिफ्ट वॉज हैपनिंग, बट वी ट्राइड टू सर्वाइव बिकॉज for us making our own games was the main priority. To do that we kept doing B2B, जो client work करते रहे हम लोग. So 2021 तक हमने client work किया, then we completely stopped. We took the grant, we built a vertical slice, and 2024 से we started full. Today we don't do client work. It's only Mukti and the other new IPs that are. That's wonderful, Weber. And what kind of research goes into creating a narrative game? Now, since your entire canvas is very India-based, and like you said, India has very rich history, culture to offer to such immersive experiences. So, what fuels your research? Like, what is it? Do you make sure that I, incorporate these cultural aspects as well in the game to make it more, real? So there is a lot of research because you need to be very sure that आप factual बातें करो. आप एक ऐसे सब्जेक्ट पे काम कर रहे हो जो बहुत ही सेंसिटिव भी है, so you can't do anything wrong over there. इंडिया सेटअप आप जब करते हो ना तो ऑफेंड बहुत लोग होते हैं. तो Offense is free. So that is something that we also Right. wanted to make sure कि we don't screw up on that side. I am not a person who reads a lot, but I am a big video consumption guy. Like मैं इतनी चीज़ें देखता हूँ, पॉडकास्ट से लेके डॉक्यूमेंट्रीज से लेके. आई फील दैट इज़ माई वे ऑफ कंज्यूमिंग कंटेंट और अंडरस्टैंडिंग थिंग्स. जितना कोई मुझे पढ़ के बताएगा मैं देख के सीख सकता हूँ. सो आई डू दैट अ लॉट. एंड बिकॉज we wanted to make a game in the backdrop of India to talk about modern India, but we also researched that the Western audience is very much curious about a lot of Indian aspects. जैसे culture है, colors हैं, you go to the Himalayas, there's a lot of yoga that is happening, right? So वो लोग उसमें बहुत हैं. तो we wanted to figure out कि ऐसा क्या करें, ऐसा क्या setup लाएं जिसमें we can bring out all these elements because it is a small team. We are only 15 people who are working on this game. तो आप
इतने छोटे टीम में ओपन वर्ल्ड गेम नहीं बना सकते जहाँ पे प्लेयर खुलेआम रास्ते में घूम रहे, ही कैन डू एवरीथिंग. सो वी वांटेड टू कीप इट लिमिटेड. तो एक लिमिटेड एरिया में कैसे इसको फिट करें. सो doing multiple rounds of iterations, we figured out museum could be the best place where the story can also be told, and we can by default keep a lot of cultural elements जो प्लेयर देख भी सकता है, सीख भी सकता है, राइट. तो प्राइमरी लीनियर स्टोरी जो है गेम की, मुक्ति की, इट्स अ 7 hour स्टोरी. बट इफ़ यू आर एन एक्सप्लोरर, अगर आपको एक्सप्लोरेशन में इंटरेस्ट है, तो यू विल स्पेंड 20 hours विद इन दैट म्यूजियम, because it has 1000 artifacts from Indian culture and ethos. तो जैसे आप ताजमहल का मिनिएचर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि why, क्या है उसके पीछे. There is a puzzle a lot of people don't know. Aryabhatta's contribution in the overall physics and astronomy, right? उनको सबको पता है ये जीरो इन्वेंट किया है. He has a lot of achievements. So there is a puzzle in the game which is around Aryabhatta's contribution in the discovery of solar eclipse, right? So you basically solve a puzzle which arranges all these things and then you come to understand. अभी ये इंडिया के लोगों को ही नहीं पता, right? So these are things that we trying to incorporate throughout the game. There is a puzzle on Lothal Port. Now Lothal Port is world's first port that was built in India. जो मोहनजोदारो के टाइम पे बनाया था. टुडे व्हाट हैपेंस इन पनामा कैनल्स, जो वाटर लेवल राइज करके शिप्स को भेजते हैं, दे यूज्ड टू डू दैट टेक्नोलॉजी इन हड़प्पा एंड मोहनजोदारो's टाइम. दैट्स वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्ट. सो वी हैव अ मिनिएचर पजल जहाँ पे यू नीड टू सॉल्व दैट पजल बाय एडजस्टिंग द वाटर लेवल्स एंड यू गेट एन एविडेंस आफ्टर दैट. सो we are making 100% use of this entire setup of an Indian museum जहाँ पे आप stories डाल सकते. Like, how did you, like, what, that's what I'm asking, कि फिर how did you come up with, oh, these port, what you're talking about? So where did that come from? The ideas of these things come from? So we are doing a lot of research. lot of Yeah, research it is all must go into research. this. But a brownie point that Underdogs has is the guy that I'm talking about, Yeah. Sankesh, right? He's an encyclopedia. So you ask him about a universe, he'll talk about Right. universe. You ask him about Chola Empire or Maratha Empire, he'll give you the Right. entire details of right from the gods to the Oh. asuras. He'll talk about everything. So Right. he is like one point of validation for us, that Makes he sense. brings in a lot of value to that entire story. Very interesting. I think then understanding of all these things is also very important when creating a Yeah. game, right? So it's not just very technical also. It's not just very, I don't know, theory based also. It's a complete, I don't know, it's an amalgamation of so many different things. As a game designer, this is again a nice point that you brought up, is because when I entered India Games, right, I was under an impression मुझे machine मिलेगी and I'll start making art assets. My producer, who was managing me, day one, he gave me this big book about Greek mythology, and he gave me the book and he told me to read it. For first 10 days I'm just reading the book. I'm doing nothing in this company, I'm sitting and reading the book. I got to understand over the years, I got to understand that game designing is one tough job where you need to have understanding and idea about everything. Like कल जाके अगर a founder comes and tells you we want to make a game on Mahishasura, you need to know, you have to know about it, right? Like things like that. So I read that entire Greek mythology and I was, so this is the thing, right? When you are a game designer, you need to consume a lot of content. Of course, because ultimately it is Yeah. storytelling, Yeah. right? It's very, I don't know, it's too artistic, it's too story based. I'm liking this. Yeah. So what are movies also, right? Movies are not Right. fictional. It is a story that someone has experienced or saw around him, right? A director, a writer Correct. has seen something somewhere, and that is what is coming to life, right? So you need these are also great observers, and creative industry needs good observers, right? True, we really do. So now that we've spoken about how Mukti's journey has been like and what kind of research went into this, I would like to ask you, what have been the challenges that you faced while, bringing Mukti to life?
a lot of challenges actually. Like I said, 2018 is where we started the first draft. Idea was to do it in 6 months, finish the game in 6 months, but funding today also is a big problem in India. There is a reason for that. India से अभी तक there is no big title that has come out. Investors are there. There are a lot of good VC funds in India, but they only invest in mobile games. तो वी आर बिल्डिंग समथिंग ऑन द पीसी एंड कंसोल, राइट. अगर आप मोबाइल पे बनाओगे तो शायद एक बिजनेस स्ट्रैटेजी के साथ यू विल गेट एन इन्वेस्टर, बट फॉर अस दैट वाज अ प्रॉब्लम, फंडिंग द बिगेस्ट प्रॉब्लम, and which got solved because Unreal came and then Sony came. Then the next thing is India at this point does not have good expertise. India has talents. जैसे you'll find great people who have good technical interpersonal सारे skills है, but experience नहीं है. When I say experience, I'll give you a very simple example to understand this, right? PC और console games में ना हाई फिडेलिटी, जो विजुअल फिडेलिटी जो मुक्ति भी रीच करने की कोशिश कर रहा है, एंड इट इज़ ऑलरेडी आउट देयर, द ट्रेलर इज आउट, यू कैन सी द विजुअल्स ऑफ द गेम, दे आर Yeah, I did check it out. I think it was so wonderful. Yeah, and that is pre-alpha. It is Right. still like pre-alpha के बाद alpha होता है, beta होता है, फिर gold होता है, फिर release होता है. So we still have long way to go. और polish होगा वो. But if you look at that, right, वो visuals तभी आते हैं जब आपके पास वो experience हो कि ये छोटी छोटी चीज़ें मैं adjust करूँगा optimization में, तो जाके वो visuals उतने better दिखेंगे. अब वो जो technical skills है ना, वो इंडिया में नहीं है, बिकॉज इंडिया के लोगों ने वो लेवल के गेम्स नहीं बनाया. वॉट इज हैपनिंग विद अस बिकॉज ऑफ सोनी इज, सोनी हमारे साथ एवरी वीक 4 से 5 कॉल्स करता है. इट इज़ नॉट जस्ट फंडिंग दैट दे आर गिविंग. 4 से 5 कॉल्स, देर आर 2 कॉल्स विद इंजीनियरिंग टीम जो एक्चुअल PS5 कंसोल्स पे काम कर चुका है. वो लोग हमें हेल्प कर रहे हैं टू मेक श्योर कि वो विजुअली ब्यूटिफुल दिखे. देर इज़ अ टेक्निकल आर्ट टीम जो टेक्निकल आर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से गेम को इम्प्रूव करती है हमारे साथ बैठ के. सो दे ऑन द कॉल दे कम एंड टेल अस. ऐसे ऑप्टिमाइजेशन जब भी होता है ना गेम का, तो दे लुक एट एवरी थिंग कि वो स्क्रीन पे कितनी चीज़ें आ रही है, तो वो हमें बताएंगे कि ये स्क्रीन में से ये जो छोटा सा एसेट है इसको निकाल देते हैं, ये हमें 1 मिली सेकेंड बचाएगा. अब इंडिया में ये बातें नहीं होती, Right. मिली सेकेंड्स की बातें नहीं होती. इंडिया में लोगों को ये लेवल का ऑप्टिमाइजेशन नहीं पता. देन यू अंडरस्टैंड लास्ट ऑफ अस क्यों है, गॉड ऑफ वॉर क्यों है, बिकॉज दे नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो इंडिया में लोगों को नहीं पता. तो वो एक्सपर्टीज मिसिंग है आज भी इंडिया में, और हमारे लिए भी थी मिसिंग, बट बिकॉज सोनी केम ऑन बोर्ड, both the things, the fund and thing, this got solved. The next was the story and the factual elements of what you said. But it's an iterative process and we are trying to figure out. Challenge to hai, but you'll need to make sure everything is correct, so that, because it's a sensitive subject. Another one is specifically because I'm from Mumbai and we are running this company from Mumbai. Mumbai is super expensive. और आपको टैलेंट को होल्ड करके रखना फॉर 2-3 years ऑफ दैट डेवलपमेंट इज़ अ बिग चैलेंज. बट बिकॉज मुक्ति इज़ supposed to be, or you can say, not saying because this is my game, not blowing my own trumpet, but it is the most anticipated game from India today. It is a very ambitious project and everybody knows that if this comes well, this is going to put India on a global map. बहुत बड़े लेवल पे. So for that very reason the team is super excited, right? And we have that thing now that, you know, isko, that once we do this, there are multiple IPs and all. So all of these things put together, these challenges were there since 10 years, but धीरे धीरे करके solve हो रही है. But just speed से होना चाहिए शायद, speed से it's not happening. Yeah. So the main is there are no expertise. Yeah, We don't have any experiences, formal yeah. education, Yeah. right? So I think I would again like to circle back to this, that is a formal education so necessary? Because if people have to get into this, do they really have to have a very intricate formal education when it comes to just this field? Or they can come from anywhere
just bring in their passion, and you can still learn along the lines. Yeah, today gaming industry is at that point where you don't need formal education. Very honestly, 50% of my employees are undergraduates, so it doesn't matter. It's a skill based setup. टुडे गेमिंग इंडस्ट्री, आप किसी भी कंपनी के फाउंडर से बात करोगे, दे विल ओनली प्रेफर पीपल हु आर गुड एट व्हाट दे डू. दे डोंट केयर अबाउट द सर्टिफिकेशंस, द डिग्रीज और एनीथिंग. बट आप वो स्किल सेट कैसे लाओगे, दैट्स अ चैलेंज, बिकॉज वो फॉर्मल एजुकेशन इंडिया में है नहीं. तो वो स्किल सेट लाने के लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा ना, देयर आर 4 डोमेन्स: गेम डिज़ाइन, गेम आर्ट, गेम प्रोग्रामिंग, गेम टेस्टिंग. अब इन सारों में ना गेम टेस्टिंग इज अ डोमेन जिसमें आपको एक्चुअली किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं लगती. आप अगर क्यूए टेस्टिंग की ओपनिंग है, आप एक्चुअली अपने गेम्स आप जितने खेलते हो, आपका जो वो आप प्रूव करके अंदर घुस सकते हो. फॉर द रिमेनिंग 3, राइट, गेम डिज़ाइन, आपके लिए आपको इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको लिखना आना चाहिए और आपको विजुअलाइजेशन करना आना चाहिए. इफ़ यू कैन प्रूव कि मैं ये कर सकता हूँ, then you can easily crack that up. But आप सीख कैसे सकते हैं उस चीज़ को? There are basic courses also which can tell you basics of game design terminologies. कि गेम प्ले क्या होता है, गेम मैकेनिक क्या होता है, गेम फ्लो क्या होता है, कोर लूप क्या होता है. ये सब टर्मिनोलॉजीज है जो गेम डिजाइनर्स यूज़ करते हैं. आप उसके कुछ छोटे मोटे कोर्सेज भी कर लोगे, सर्टिफिकेशंस कर लोगे, तो यू विल हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग. एंड देन यू क्रिएट योर ओन पोर्टफोलियो. क्योंकि उसके लिए आपको किसी से पैसा लेने की जरूरत नहीं कि वो देगा तब मैं बनाऊंगा. इट्स अ गेम डिजाइन जॉब, राइट? सो यू कैन डू इट इन योर हाउस ऑन अ पेन, ऑन अ पेपर, यूजिंग अ पेन. सिंपल मॉक स्क्रीन्स आप बना सकते हो. तो आप एक वेबसाइट बनाओ जिसमें आप अपने खुद के 5 गेम आइडियाज अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके लिखो, जो एग्जिस्ट नहीं करते, यूनिक आइडियाज. वो पोर्टफोलियो में और एक चीज़ ऐड करो कि कोई भी पॉपुलर गेम जैसे मारियो हो, उसको डाइसेक्ट करो कि आपके हिसाब से उस गेम में ऐसा क्या है जो उस गेम को इतना पॉपुलर बनाता है. नाउ व्हेन यू टेक दैट पोर्टफोलियो टू एनी कंपनी एज एन इंटर्न या फ्रेशर, आप वो देख के ना सामने वाले को पता चल जाएगा कि आप में विजुअलाइजेशन है, आप अच्छे तरीके से लिख सकते हो, एंड यू अंडरस्टैंड गेम्स बिकॉज आपको टर्मिनोलॉजीज आते हैं. दिस इज अ सिंपल पाथ. कोई एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, बट यू नीड टू बी वेरी पैशन ड्रिवन. आप बहुत परसिस्टेंस होना चाहिए आप में. आप बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल टुडे ऑल्सो क्या करते हैं, इंटर्नशिप मिल रही है, पेड नहीं है तो नहीं जाएंगे. दीज आर द इंडस्ट्री इज वेरी अर्ली, राइट? तो आपको जो मिल रहा है, इफ यू कैन एंटर एंड देन फिगर आउट योर पाथ्स, इट्स नाइस. अगर आप गेम आर्ट फोकस कर रहे हो तो सिर्फ ये जो टूल्स है, अगर आप 2D में कर रहे हो तो आपको फोटोशॉप की ज़रूरत है. अगर आप 3D कर रहे हो तो मैक्स, माया, सब्सटेंस पेंटर, ये टूल्स को आप सीखो, इसको पॉलिश करो और अगेन पोर्टफोलियो बनाओ. उस पोर्टफोलियो में आपका काम डालो और जाओ. दैट इज़ द एंट्री पॉइंट. अगेन उसमें भी ना वो पोर्टफोलियो को भी आप इतना पॉलिश काम दिखा दो उसमें. इट्स बिकॉज इट्स एंड ऑफ द डे टूल्स है. आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओगे ना, आपको कोई ये नहीं सिखाएगा कि ये आर्ट को ब्यूटीफुल कैसे बनाए. आपको टूल बॉक्स सिखाते हैं. अगर आप फोटोशॉप का कोर्स करोगे तो आपको फोटोशॉप के टूल बॉक्स सिखाएंगे कि ये टूल यूज़ करके ये कर सकते हो, ये टूल यूज़ कर उसको कैसे साथ में यूज़ करके अच्छा आर्ट बनाना, वो आपका काम. It's again based on your own इट इज़ लाइक अ गिटार कि आपको कॉर्ड सिखाएंगे, स्ट्रमिंग सिखाएंगे, गाना आपको बजाना है, राइट? सो यू लर्न दैट सॉफ्टवेयर टूल्स एंड यू पॉलिश, मेक yourself so skillful कि आपका पोर्टफोलियो बहुत ब्यूटीफुल दिखे. एंड देन द थर्ड थिंग इज प्रोग्रामिंग. प्रोग्रामिंग में एक एडवांटेज ये है कि आप अगर बाय डिफॉल्ट नेचुरली आपका दिमाग बहुत अच्छा चलता है लॉजिकली कोड करने के इसमें, तो अगर या फिर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, कंप्यूटर साइंस से हो, देन यू हैव एन एडवांटेज क्योंकि उसमें कोडिंग होती है बेस लेवल की. वो ही यूज़ करके इफ़ यू पिक एनी ऑफ दीज टूल्स, अनरियल या यूनिटी, जिसमें जो इंजिन्स है, जो गेम इंजिन्स है जिसमें आप गेम बनाते हो, उसको यूज़ करके सेम पोर्टफोलियो बनाओ जिसमें आप वही वेबसाइट में अब इस बार आप सिर्फ लिख नहीं रहे हो, आप गेम प्ले बना रहे हो. आपने कुछ बनाया जो प्लेएबल है, जो वेबसाइट पे सीधा कोई खेल सकता है. ऐसे 4-5 डेमोज बना के लेके जाओ. दैट इज दिस आर द सिंपल वेज यू कैन गेट इनटू द इंडस्ट्री. लास्ट जो मैंने गेम टेस्टिंग का बोला ना, a lot of people also think that game testing is easy. It is not.
गेम टेस्टिंग में आपको गेम खेलना पड़ता है, बट आपको वो इतनी बार खेलना पड़ता है कि दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है गेम टेस्टिंग में. पहली चीज़ कि आप ऐसे ऐसे लेवल्स खेलते हो जो आप यूजुअली गेम्स में जिसको आप स्किप करना चाहते हो वो आपको 2,000 बार खेलने पड़ते हैं. इमेजिन आपने GTA वाइस सिटी सुना है राइट? उसमें एक मिशन था हेलीकॉप्टर वाला, चॉपर का मिशन था, एक छोटे टॉय वाला, जो आज भी बहुत कॉम्प्लेक्स लोगों को नहीं आता हो. इमेजिन द टेस्टर प्लेइंग दैट लेवल फॉर 10,000 टाइम्स. Right. आप अगर गेम टेस्टर हो तो आपको वो करना पड़ेगा. सेकेंड थिंग इज एक होता है रिग्रेशन टेस्टिंग, जिसमें जॉयस्टिक या कीबोर्ड या मोबाइल उसको इतने रैपिडली प्रेस करते हैं रैंडमली कि कोई बग निकल के आ जाए उसमें से. सारे कीज दबा देंगे. अब मैं जब ये रिग्रेशन टेस्टिंग कर रहा हूँ और बग निकला तो मैं प्रोग्रामर के पास क्या लेके जा रहा हूँ कि मैंने रैंडमली कुछ किया. Yeah. आप नहीं कर सकते. Right. यू नीड टू हैव अ वेरी डिटेल्ड आई ऑन आपने क्या किया, आपकी जो पूरी स्टेप्स है कि आपको प्रोग्रामर को ये बताना पड़ेगा कि देख मैंने 19 चीज़ें की ये सीक्वेंस में, तब जाके ये बग निकला. Right. इट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क. गेम टेस्टिंग मतलब आप गेम खेलो ये नहीं होता. सो इट इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल टास्क, बिकॉज जब गेम में इश्यूज आते हैं, जब साइबर पंक गेम रिलीज होके वो फट गया था, it had all the major issues. The Yeah. whole blame was on the testers because they didn't play it well. Right. Right. So broadly, these are the sectors and these are the ways that you can get it. इसके ऊपर if you have money, you are fortunate, you have money, तो आप ये जो local institutes है उसमें आप वो particular domain से related क्या सीख सकते हो, वो सीख के end goal आपका portfolio ही है. Right. वो बना के आप जाओ. Interesting. I think so. People can work on these basic skills and then upgrade from there, create something for themselves, take it to people, and I think it will work for you. Yeah. That's the key is mastering your skill. Yeah. Basically. Nobody in today's world is actually, in gaming at least, is looking at your degrees and certifications. Right. As long as you are, I don't know, Yeah. hands-on with your skills and your visualization. Yeah. I think you're good to go Yeah. when it comes to gaming. Yeah. And patience. I think a lot Yeah. of patience. Gamers must need Yeah, a lot of patience. Yeah, there was one guy who learned game design from UK, came to our studio for an interview, sitting in front of me and consistently bouncing on the chair for 30 minutes. I asked him to leave because he had no interpersonal skills, right? उससे better I'll prefer someone who is very grounded, humble and eager to listen to what people are trying to say, and तो वो certification से कुछ नहीं होने वाला. Everybody is looking at the skill set and the So, what are certain qualities, if you had to, like list a few, that a gamer should have? Qualities, I don't know, traits or some skills that you really look into a gamer, that this will really You're take you talking far. about a game developer, like someone who is making games, right? Right, someone who's into So making design. see, again, it is as good as any employee that you look at. Like it's आप कोई भी, in fact software developer से लेके आप driver तक, you will need one common factor is that the person needs to have good communication and interpersonal skills. We look for long-term roles. See, we are a small company, 15 people. There are 3-4 core people into it. Tomorrow we want to grow as 100 people company. But practically, आप मुझे बताओ, 4 people, can 4 people manage 100 people? No, right? We need 10 more people who are equally talented like us, and वो ऐसे नहीं आएंगे, वो सीख के आएंगे, right? So when we hire someone, we want him to stay with us, learn with us 5 years, 6 years, get to our level and then manage more people, right? वो सिर्फ टेक्निकल स्किल्स से नहीं होगा. अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आई डोंट नो इफ आई एम लंबा खींच रहा हूँ, बट एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि टेक्निकल स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स में डिफरेंस क्या है. टेक्निकल स्किल्स एग्जांपल ले लो, आप एक बहुत बढ़िया स्विमर हो, ठीक है, और आपके साथ आपके जो फ्रेंड है, इट्स नॉट अ गुड स्विमर बट इज अ ग्रेट नेटवर्किंग गाय. बहुत उसने रिलेशंस बनाए जिंदगी में उसके इंटरपर्सनल स्किल्स की वजह से. आप दोनों डूब रहे हो समंदर के बीचों बीच. इवन इफ यू आर अ स्विमर, टेल मी, कैन यू एक्चुअली मेक श्योर दैट यू रीच टू द शोर? पॉसिबली नॉट. क्या होता है, वो एक वहां से शिप आती है,
और ये बंदा उसमें से 4 लोगों को जानता है. That ship will save this guy, Yeah. not you. Right. These are the things that are important when you are actually building yourself also as a professional in the industry. Networking, relationship building से ऊपर कोई skill नहीं है. Right. If you ask me if I want to hire someone who is technically genius और दूसरा जो okay है technically but he is very dedicated, very good with the team, has a long term plan, I'll stick to this guy because technical skills सीखे जाते हैं. Right. That's ये वाले something you can skills को still. आप सिखा नहीं सकते. Right. वो अंदर से build होने चाहिए individually. True, makes sense. And now that we have talked about skills, we've talked about how one can get into this, and how do you see the future of gaming in India now? Now that you're working on such a big project, which is funded by these big companies, so where do you see? How do you see gaming in India evolving now from here onwards? So gaming is already huge on mobile side. उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर मैंने आपको पूछा कि इंडिया का एक्चुअल गेमिंग ऑडियंस कौन है, तो फर्स्ट आंसर हर किसी से ये आएगा कि पीपल हु सिट इन टियर 1, जिसके पास कंसोल्स है, जिसके पास हाई एंड मशीन्स है, वो रियल गेमिंग ऑडियंस है. आंसर इज रॉन्ग. द रियल गेमिंग ऑडियंस इन इंडिया इज अ ताऊजी सिटिंग इन अ रूरल विलेज विथ अ वेरी लो एंड फोन. बिकॉज अपना ऑडियंस ही वो है. वी हैव सो मेनी पीपल एंड दैट इज वाई लूडो किंग वॉज फेमस इन इंडिया, राइट? क्योंकि वो लोग खेल रहे हैं. और हम कितना भी डिनाई करें, इंडिया का टियर 1 जिसके पास हाई एंड मशीन्स है, देर ओनली 2%, 5%, 2 से 5% के लोग हैं. बाकी पूरा मोबाइल है. दैट इज द रीजन अ लॉट ऑफ गेमिंग कंपनीज इन इंडिया मेक मोबाइल गेम्स. And globally also, India has come to, I think, second rank in terms of the population of downloads, like the number of downloads that you can make on mobile. But because we are building games on PC and console, we are also seeing a shift there. वो भी बढ़ रहा है. And ऐसा हो रहा है कि everybody now is getting into that zone where they are having great stories to tell. एंड पीसी और कंसोल पे जिस तरीके से इमर्सिव स्टोरी टेलिंग आप कर सकते हो, मोबाइल पे नहीं कर सकते. मोबाइल एक ऐसा डिवाइस है जहाँ पे आप वक्त होता है ना तब आप गेम खेलते हो. जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो, कम्यूट कर रहे हो, रेस्ट रूम में हो, आप गेम खेलते हो. 1-1 मिनट के सेशन है वो. पीसी एंड कंसोल आर इमर्सिव बिकॉज यू सिट विद टाइम एंड आप अंदर घुस जाते हो उस गेम के. वी आर सीइंग अ शिफ्ट बिकॉज बहुत टैलेंटेड डेवलपर्स हैं इंडिया में. आज जब हम बात कर रहे हैं, there are 150 good games that are being made. Nobody is aware of those games. अगले 2 से 3 साल में India will have so many good PC and console titles in the market that वो shift हो जाएगा पूरा. I mean ऐसा नहीं, कभी नहीं होगा कि India will be more PC and console. क्योंकि अगर यहाँ पे 10 लोग बढ़ रहे हैं तो यहाँ 1000 लोग बढ़ रहे हैं मोबाइल पे. मोबाइल will always be top, but PC बढ़ रहा है. Another very very strong thing that I believe in is there is going to be a big overlap between Bollywood movie industry, not just Bollywood, the entire movie industry, Indian cinema and games. वो बहुत बहुत बड़ा overlap होने वाला है. There's another reason why I feel this. Imagine Raja Mouli putting or Karan Johar putting 400 crores into a movie बनाने के लिए. There is a cap of revenue. पुष्पा ने आई थिंक 2000 crores बनाया, बट वी हैवंट सीन एनी मूवी विच हैज गॉन अबाउ दैट, राइट? वो आई डोंट नो, मुझे आई माइट बी नॉट अवेयर, बट जहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है 2000 के ऊपर नहीं गया है. 400 करोड़ डाल के उतना बनाया उन लोगों ने. ब्लैक मिथ वूकॉन्ग एक गेम आया था लास्ट ईयर, चाइना से बना था वो. इट वॉज मेड इन 50-60 million dollars. दैट गेम मेड 10,000 crores in 1 month. अब मुझे आप बताओ, why wouldn't Karan Johar or Raja Mouli put equal amount of money in a game? They are storytellers. It's just a medium difference. बाकी कुछ नहीं है. Plus it's immersive and it's more hours of entertainment that you can give to people. So there is going to be this overlap जहाँ पे ये सारे जो बड़े directors, storytellers of India, they will make immersive entertainment in the next 2 to 3 years. One great validation I can tell you is Death Stranding 2 is a new game that came out 2 months back. Hideo Kojima is considered as a legend game designer in the world.
उसका गेम है डेथ स्ट्रैंडिंग 2. Surprise element in that game is Raja Mouli has done a cameo in that game. Yeah, in the game. So this is a validation already. Raja Mouli is already looking for big studios in India who can make amazing big games for them. तो वो overlap होने वाला, and that is where a lot of storytellers are going to bring out their amazing stories on all of these places. So like I think we can consider something very good happening for the gaming industry. It is going to be crazy. Yeah, very interesting. I think I would be very interested in watching Rajamouli in a game. You Google it, you'll find it. There's an image also. Oh. We can put that image actually. Interesting. Apart from this, I think what is something you would like to tell someone who wants to get into gaming, then now that it has this huge, global future, even for people in India, what would be a message you would like to give out for someone who wants to get into developing games, designing games? I think one mistake that a lot of people do is they want to do everything. Actually वो इसलिए होता है because उन्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं है. जो 4 डोमेन्स की मैं बात कर रहा हूँ, लोग I run my own YouTube channel, right? I talk to hundreds of these game developers, aspiring kids, aspiring game developers जो अभी colleges से निकल रहे हैं. They message me saying मुझे hire कर लो, I know art, I know programming, I can do game design. Nobody is going to hire you like that. Specialization important होता है. आपको पता ही नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करना है. What lot of kids are doing is they are trying to do everything. उनके पास फ्री इंजन है, Unreal या Unity उठाएंगे, they'll make artwork या फिर asset store से उठा के डालेंगे. If you tell me 10 things, I wouldn't hire you, right? तो आपको क्या करना है कि आप first and foremost, बहुत important चीज़, आप शांत बैठो, 4 डोमेन्स में से आपका स्किल सेट क्या है उसको मैच करो. अगर मुझे पता है कि मैं प्रोग्रामिंग में पागल होने वाला हूँ आगे जाके, which is what I felt when I was in that, right? I was like, programming is not कि मैं अगले 20 साल बाद I don't see myself as a programmer. I don't, right? I see myself as a creative, doing a lot of creative stuff, right? तो पहले आप वो 4 डोमेन में से आपका जो कॉलिंग है ना वो फिगर आउट करो. आपका अगर आर्टवर्क अच्छा है तो बाकी सब छोड़ो, सिर्फ गेम आर्ट पे फोकस करो. आपको अगर वर्ल्ड्स बनाने हैं, कैरेक्टर्स, आपको स्टोरीज, तो गेम डिज़ाइन करो. आपका वो स्ट्रॉन्ग है एनालिटिकल लॉजिकल स्किल सेट, तो आप प्रोग्रामिंग में करो. अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं आ रहा है तो गेम टेस्टिंग इज स्टिल अ गुड ऑप्शन, बट अगेन इट्स अ रिस्पॉन्सिबल जॉब. ऐसा नहीं है कि ये नहीं आ रहा है इसके लिए. A lot of bigger founders today in gaming started as game testers. Right. They went into the company as game testers, switched to game designers, and then grew as producers. ऐसा बहुत लोगों ने किया हुआ है. तो don't go behind doing everything. See, सारी चीज़ें यूजफुल होती है जब भी आप खुद का कुछ करते हो. जब भी आप स्टूडियो, अगर आपको लॉन्ग टर्म में अपना खुद का स्टूडियो स्टार्ट करना है, देन ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल हेल्प. उसका अंडरस्टैंडिंग होना इज़ गुड, बट किसी कंपनी में ये जाके मत बोलो कि मेरे को ये 4 चीज़ें आती है इसके लिए मेरे को हायर करो. nobody will, no, nobody will. Right. You will need a specialization. I am putting out a post for a artist. I can't hire a guy who knows programming. Right. And he's trying to figure out his job profile based on मेरे को सामने से क्या आएगा. I can't do that. You need to be specialized on So that. instead of dabbling into all 4 or 5 things together, pick a specialization and like perfect get to I don't know, just perfecting polish, that, polish that thing and then go for it. It helps. So everything helps in studio because see, in my case also, I was really good at art in school. Right. I did an elementary and intermediate, all those exams. I was good at art. I wanted to go into art. I did engineering. I knew programming. Right. Now I had 2 skill sets. I went as a game designer. I had 3 skill sets. So when I started Underdogs, I knew कि मेरा आर्टिस्ट गलत काम कर रहा है. I knew मेरा प्रोग्रामिंग गलत काम कर रहा है because मुझे वो चीज़ें आ रही थी. Right. But So if the you- knowledge always helps. Always helps, yeah. But it's always better to specialize. Yeah. Makes sense, I think.
That's something I think students who are aspiring to get into game designing, game developing should really keep in mind. And is there anything that really, any game particularly, which really shaped your vision of what kind of games you want to create? So this category that we are working in, right? It's a special category. Like Mukti falls into exploration narrative category, जिसमें 2 से 4 घंटे का गेम प्ले होता है usually. Ours is a little longer, but these games did really well in the last 8 7 8 years. Games like What Remains of Edith Finch is on the top. Like it's a beautiful game. It's a 3 hour game, no killing, nothing. It's just a beautiful narrative story about a girl. Firewatch, What Remains, Everybody's Gone to the Rapture, Gone Home. All of these games are very artistic games. These games personally I love, and because of me, the it has translated into the studio as well. Everybody, if you come to the studio, you'll see posters of all these big games only, right? But along with this is on the gaming side. But along with this, uh, like I said, I did theater for 10 years of my life. I've acted and directed Marathi plays on theater for 10 years. So the love for storytelling was always there. It was just that आप 200 लोगों के सामने 400 लोगों 1000 लोगों के सामने परफॉर्म कर रहे हो, हाउ कैन यू एक्चुअली bring that story in a medium which is very immersive and which can reach to global audience. So that was very exciting for me, challenging and exciting both. So clubbing both these things together, we decided that we want to go in this direction. This is our calling. These are the games that we can build. There's a company called Naughty Dog, which has made games like Uncharted and Last of Us, which are few of the best games in the world today. That's the aspiration. So it's story driven games. We can't make PUBG like games. We don't want to make those. We don't have expertise also. We are good at storytelling. We'll make those games. But all these things are shaped us. Correct. Now that you've brought up PUBG, I think one thing I think I used to think also earlier, that when people design games, develop games, is how addictive this can get also a factor that people think of, research about, or it just happens? It is called as retention. In gaming, it is called as retention, which is a factor that everybody needs to make sure that your game has. Not in our category, because it's a linear story. We don't want people to play our game second time. It is a one sitting experience that people have to go. But games like PUBG or Mario or any games which has that repeat value to it, the retention is a must there. So there are techniques. How do you do that? Like in games, just like in reels, like there are 3 seconds and you need to grab that attention, right? In games, it's like the first 3 minutes of your games are important. So if you do that, then your audience is hooked. Then and that retention only comes in place when you are able to, and these are all, I think, technical terms that I'm talking about. There's something called as day one retention. There's something called as day 7 retention. So day one is, Aaj, if you download my game, are you coming back tomorrow to play that game? And I'm talking about mobile games, not the linear ones. Are you coming tomorrow to play my game? If you come, if 100 people download my game today and 50 people come tomorrow, so my day one retention is 50%. And ideally in mobile games, 50-55% day one retention is a big number. Usually people try to do like 35% at least. Day 7 then drops to say 20%. Day 30, मतलब एक महीने तक आपका गेम कोई खेल रहा है क्या? All these mobile game makers, developers, just consistently making sure that their games D30 is best. तभी I think that is why a lot of mobile games also have these little Daily- perks daily that rewards, you get. I think yeah. Candy Crush gives you, one daily reward. Yeah, So yeah. if you come every day, so you get some reward. that's So one it's of the for techniques that retention. I mentioned. So आप daily rewards डालोगे तो वो आएगा. Then I might have also noticed there is something called as notification that comes. Right. आपने कुछ किया भी नहीं है अंदर, but then it tells you your health bar is filled, go
someone needs you, and then you go. Once you click on it, you go into the game, right? There's one number added to that retention. So retention is the holy grail of mobile games. Everybody makes sure कि वो day 30 तक अच्छा हो, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली रेवेन्यू में ट्रांसलेट हो जाता है. अगर आप डे 30 तक मेरा गेम खेल रहे हो, विच मीन्स आप एटलीस्ट दिन में 2 सेशंस खेल रहे हो. एक सेशन अगर 15 मिनट का है, तो अब मेरा गेम, आप मेरे यूज़र हो जो 30 मिनट्स आपके दिन के उसमें डाल रहे हो. अब मेरा एज अ डेवलपर ये काम है कि उस 30 मिनट्स में मैं आपको एटलीस्ट 10 से 12 एड्स दिखाऊं. अब वो मैं किस तरीके से दिखाऊं जिससे आप फ्रस्ट्रेट भी ना हो, राइट? पर 12 एड्स मेरे आपने अगर देख लिए, I get a lot of revenue, and I do this with every user. So Yeah, that's a huge revenue. Right. So I think, yeah, gaming future looks, I think, very bright in India currently, from whatever I'm hearing from you, even when it comes to Mukti. Any parting words you'd like to give to our audience? I think most of it though I've already said, but the thing is, one thing that I feel is, if you're passionate about any of, I'm not just gaming, any of the career fields that you believe in, don't just jump into it. Do a complete market research on it, because that is very important. Once you do that and you get that confidence, just take that big leap, because वो 1 साल में नहीं होगा, 2 साल में नहीं होगा, but वो होगा जरूर. Like it is, there is a, again, I don't know if I'm stretching this, but एक again example दूंगा. रेस जो होती है ना, when you enter a race, unless and रेस का एक ही एट्रीब्यूट होता है, फिनिश लाइन. उसमें और कुछ नहीं होता. आप यहाँ से निकले हो, there is a finish line. Unless and until you stop or you turn back, you are reaching the finish line. आप भले दौड़ के जाओ, चल के जाओ, रेंग के जाओ, you will reach there, right? So that is going to happen. But for initial, पहला जो research है ना, that is important. When I was jobless for 1.5 years, and then that 9 months का software development happened, उसके बाद भी मैं 4 महीने घर पे बैठा था. But then I was so depressed. My father came and told me that, have you done enough research on this thing in gaming industry? Because they were not aware of it. And I was very confident कि ये आगे बहुत बढ़ने वाला. So I convinced him that there is big future. Then he just said one thing. He said, I am okay, but from your perspective, will you regret this decision 20 years later, when all of your friends would be very well doing, India के बाहर होंगे? Would you regret it? And yeah. So he's like, don't choose anything that will make you regret after 20 years. And then I said, I think 2 days later I got the job, because I was automatically like the universe works that way, right? It just happens. So I would say, do enough research, and when you're confident in terms of the numbers, don't just go on your gut feeling. Talk to people who are there in the industry, understand उनसे क्या scenarios है, क्योंकि आपको नहीं पता अंदर क्या चीजें चल रही, and then you take a big leap. Once you do, you are going to win for sure. Yeah, I think that's a wonderful note we can really part on. This was a wonderful conversation, Vaibhav. I think I myself have gotten so much insight. There is so much that goes into gaming. It's something I myself am learning or understanding for the first time. I'm sure our audience who is looking to, get into this field is going to definitely enjoy this conversation. If you people like this conversation and got a lot of insights from this, please don't forget to like the episode, comment, share, and also subscribe to our channel. Hit the notification icon as well, so you are always notified when we drop a new episode, which is every Friday. And that was all on What's the Point Season 2. On today's episode, see you in the next episode. Thank you.